Hello student, today in this video we learn mathematics of class 3rd and the topic name is subtraction. Subtraction. Let's revise. Subtraction means taking away. Subtraction का मतलब है कुछ लेना. When we subtract a smaller number from a bigger number, the answer we get is called the difference. जब हम किसी बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो आंसर होता है उसे डिफरेंस कहा जाता है. Subtraction is an operation in which one number is taken away from the another number. Subtraction is the inverse operation of addition. Here two numbers are given, 43,276 and 32,152. So 43,276 is minuend and the other number is subtrahend and the answer is called difference. Now take some example. Example 1. Subtract 35 from 185. And example 2 is subtract 37 from 152. So see example 1. At first, bigger number we write on the top. Which is bigger number? 185. And the smaller number we arrange according to ones, tens and hundred. And then we subtract this. And the answer is 150. Example 2. Which is bigger number? 152. And we subtract 37 from 152. Here this is without, the example 1 is without carrying subtraction and the other one is with carry. So here if we subtract 5 from the 5, 0 we get, and then subtract 3 from 8 we get 5 and 1 is also remaining. So answer is 150. But in the example 2, here we take carry. We cannot subtract 7 from 2. So we take carry from the neighbor number. So we here 12. Now the new number is 12 and we subtract this 7 from 12. So we get 5. Now in the tens number, previous the number was 5 but we gave one tens, so here 4 is remaining. So now we subtract 3 from 4, so here 1 is remaining and 100 is remaining, so we carry down downside. So 115 is answer. Now subtraction of 4-digit numbers. You have learned subtraction of numbers up to 3 digit. We shall now learn to subtract 4-digit numbers. Subtraction of 4-digit numbers without regrouping. We take one example. Subtract 3,245 from 6,748. Now we solve in step by step. Step 1. Arrange the number in the columns as shown. सबसे पहले नंबर्स को जिस तरह से कॉलम में बताया हुआ है उस तरह से हम अरेंज करेंगे. वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, हंड्रेड के नीचे हंड्रेड और थाउजेंड के नीचे थाउजेंड. स्टेप 2. सब्ट्रैक्ट द वंस. 8 ones minus 5 ones equal to 3 ones. Write 3 in the ones column. अब हम वंस वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे. 8 वंस में से 5 वंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 3 वंस प्राप्त होगा और उस 3 वंस को हम वंस वाले कॉलम में लिख देंगे. स्टेप 3. सब्ट्रैक्ट द टेंस. 4 tens minus 4 tens equal to 0 tens. Write 0 in the tens column. अब हम टेंस वाले नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो 4 टेंस में से 4 टेंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 टेंस मिलेगा, और उस 0 को हम टेंस की कॉलम में लिखेंगे। स्टेप 4, सब्ट्रैक्ट द हंड्रेड्स। 7 हंड्रेड्स माइनस 200 इक्वल टू 5 हंड्रेड्स। राइट 5 इन द हंड्रेड्स कॉलम। अब हम 100 वाले कॉलम्स में 7 हंड्रेड्स में से 2 हंड्रेड्स को माइनस करेंगे तो हमें 500 प्राप्त होगा, जिसे हम हंड्रेड्स वाले कॉलम में लिख देंगे। स्टेप 5, सब्ट्रैक्ट द थाउजेंड्स। 6000 माइनस 3000 इक्वल टू 3000 एंड राइट 3 इन द थाउजेंड्स कॉलम। अब हम 1000 वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6000 में से 3000 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3000, और वो 3 जो है वो हम 1000 वाले कॉलम में लिख देंगे। सो वी गेट आंसर 3503। नाउ regrouping numbers. Let's recall. 110 इक्वल टू 10 ones. 110 का मतलब क्या होता है, 10 ones. 100 इक्वल टू 10 tens. 100 का मतलब 10 tens. And 1000 equal to 10 hundreds. Okay. A, B, C, D, 3 are given here. Here in A, 4 tens, 3 ones. So we can also write 3 tens and 13 ones. So 4 tens, 3 ones means we send 1 tens there. So here 3 tens are remaining and this 10 add in ones. So there is 13 ones. Like this, B, 3 tens, 0 ones equal to 2 tens, 10 ones. C, 8 hundreds, 4 tens, 9 ones equal to 7 hundreds, 14 tens and 9 ones. D, 3 thousands, 2 hundreds equal to 2 thousands and 12 hundreds. Now, subtraction of 4-digit numbers with regrouping. Now we take one example. Subtract 2367 from 5634. Now we solve this step by step. Step 1. Write the numbers in the place value column with the larger number above the smaller number. सबसे पहले हम नंबर्स को कॉलम्स में अरेंज करेंगे, बड़े नंबर को ऊपर और स्मॉलर नंबर को नीचे. Step 2. Subtract the ones. We need to regroup the tens and ones as we cannot subtract 7 from 4 ones and 3 tens and 4 ones equal to 2 tens and 14 ones. अब क्या करेंगे, वंस नंबर में डाउन साइड जो 7 है तो वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 4, सो वी टेक carry from tens. We take 1 tens. So here at ones place now new number is 14 ones and there 2 tens is remaining. Now 14 ones minus 7 ones equal to 7 ones. Write 7 in the ones column. Step 3. Now subtract the tens. Again regroup the hundreds and tens as we cannot subtract 6 tens from 2 tens. So 6 hundreds and 2 tens equal to 5 hundreds and 12 tens. So 12 tens minus 6 tens equal to 6. So we write 6 in the tens column. Now step 4. Subtract the hundreds. 5 hundreds minus 3 hundreds equal to 2 hundreds. Write 2 in the hundreds column. Now step 5. Subtract the 1000. 5000 minus 2 thousands equal to 3 thousands. Write 3 in the thousands column. So answer is 3267. Now subtracting from zeros. When we have to subtract a number from another number
containing 0, we do the regrouping in the same way as we do for other numbers. Let us see how regrouping is done in the following example. We take one example. Subtract 127 from 603. Now again we solve this step by step. Step 1, subtract the ones. सबसे पहले हम subtract करेंगे ones को. We cannot subtract 7 ones from 3 ones. We need to regroup the tens and ones. अब हम 7 को 3 में से subtract नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा? Regroup करना पड़ेगा. So there are 0 tens. So we first regroup 100 into 10 tens and then 110 into 10 ones. Thus we have 5 hundreds, 9 tens and 13 ones. Now subtract 7 ones from 13 ones. So 13 ones minus 7 ones equal to 6 ones. So write 6 in the ones column. Then step 2, subtract the tens. 9 tens minus 2 tens equal to 7 tens. So write 7 in the tens column. Next, step 3, subtract the hundreds. 5 hundreds minus 100 equal to 4 hundreds. Write 4 in the hundreds column. So answer is 476. Now checking subtraction by addition. Now we take one example. Subtract and check the answer by addition. Here we are seeing two numbers are given. Upper number is 5726 and the other number is 1568. If we subtract 1568 from 5726, we get 4158. The difference between 5726 and 1568 is 4158. If we add the difference to 1568, अगर जो difference हमें मिला है 4158, अगर हम उसे 1568 में add करते हैं तो we get 5726. तो हमें 5726 मिलता है. So our answer is correct. Now doing addition and subtraction together. अब addition और subtraction को साथ में करना. When we have a sum which involve both addition and subtraction, we solve it step by step. First we add and then we subtract. यदि हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन साथ में मिलता है तो हम इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हम ऐड करेंगे और उसके बाद में सब्ट्रैक्ट करेंगे. लेट्स सी वन एग्जांपल. सॉल्व 148 माइनस 256 प्लस 524. Step 1. First we add the numbers with the plus sign or with no sign before them. सबसे पहले हम प्लस वाले साइन को ऐड करेंगे या जिसके आगे कोई साइन नहीं होता है. इट इज अंडरस्टूड कि वो प्लस का नंबर होता है. तो हियर 148 एंड 524 both are plus number, so we add this number and we get answer 672. Now step 2. From the sum we subtract the number with the minus sign before it. अब जो टोटल हमें मिला है 672, उसमें से जो माइनस का नंबर है हमारे पास 256, तो उसको हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो वी सब्ट्रैक्ट 256 from 672. So we get 416. So answer is 416. Now word problems. We know that to solve word problems, we have to use the knowledge of English and mathematics. We have also studied the steps involved in problem solving. Let us use this step
and solve a word problem. अब हम एक word problem solve करेंगे. The question is, Ram bought 375 oranges and Shyam bought 654 oranges. How many more oranges did Shyam buy? अब क्वेश्चन है कि राम ने 375 ऑरेंज खरीदे और श्याम जो है वो 654 ऑरेंज खरीद कर लाया. अब श्याम ने कितने ज्यादा ऑरेंजेस जो है वो राम से खरीदे. तो वी सॉल्व दिस स्टेप बाय स्टेप. स्टेप 1, व्हाट इज टू बी फाउंड. सबसे पहले हमें क्या पता करना है. हाउ मेनी ऑरेंजेस डिड श्याम बाय. मतलब श्याम ने कितने ऑरेंजेस ज्यादा खरीदे. स्टेप 2, व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन. क्या इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है क्वेश्चन में. राम बॉट 375 ऑरेंजेस एंड श्याम बॉट 654 ऑरेंजेस. राम 375 ऑरेंजेस लाया और श्याम जो है 654 ऑरेंजेस लाया. नाउ स्टेप 3, व्हाट इज टू बी डन. हमें करना क्या है. हियर 375 ऑरेंजेस नीड टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 654 ऑरेंजेस. यहां पर हमें क्या करना है. 375 ऑरेंजेस को 654 ऑरेंजेस में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है. स्टेप 4, डू द सब्ट्रैक्शन. स्टेप 4 में हमें क्या करना है. सब्ट्रैक्शन करनी है. एंड स्टेप 5, डज द आंसर सीम करेक्ट. क्या हमें लगता है कि आंसर सही है. यस, इट डज, as 279 oranges are less than 375 oranges. So, answer is 279 oranges.